हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है और टॉपिक है थेराप्यूटिक हंगर। नाउ दिस वर्ड थेराप्यूटिक हंगर और दिस फ्रेज इज अ बिट काउंटर इंट्यूटिव, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया कि भाई पेट भर के खाओ, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ और उससे आप तंदुरुस्त रहोगे। तो जब हमने ये सुना कि हंगर कैन बी थेराप्यूटिक एज वेल, इसका भी कुछ मेडिसिनल बेनिफिट हो सकता है और मेडिकल बेनिफिट हो सकते हैं, तो इट वाज बिट बिट काउंटर इंट्यूटिव एंड बिट सरप्राइजिंग टू स्टार्ट विद। एक बुक मैंने देखी कुछ दिन पहले। मैं आपसे उसका कवर शेयर करता हूँ। तो ये बुक है कि थेराप्यूटिक हंगर, एंड लो एंड बिहोल्ड इसके जो ऑथर हैं वो हैं अवनीश भारद्वाज जी और इवेट मॉरिस। ये वही अवनीश भारद्वाज जी हैं जो हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, आपका स्वागत है। तो ये किताब अवनीश जी ने लिखी है, और अवनीश जी आप बताएंगे कुछ कि व्हाट इज थेराप्यूटिक हंगर? इस बुक को लिखने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई और क्या है थेराप्यूटिक हंगर, प्लीज। थैंक यू अमर। अमर, ये बुक एक्चुअली काफी लंबी स्टोरी है क्योंकि आई रोट दिस बुक with the inspiration from Yvette. Actually, it was her idea to put this into a book. Originally, actually started. I was working in General Electric at that time, and 2011, 12, the blogs were a trend. And all the senior managers were actually asked to start writing blogs on something other than work, but related to health. So I was one of our global managers in the US asked all the team members, his direct reports, and which, I was one of them, to start writing blogs on WordPress about something unrelated to work, but still connected to health. Right. And at that time, I thought of writing something. So I wrote a few blogs. And then Yvette actually contacted me because there were a lot of comments coming on the blogs, etc. So she asked me that, look, this can we compile a little bit of in a book form. So that is where the background is. But the term therapeutic hunger, actually, I can say that that is a word that came to my mind, although the concept is not mine. Concept is very, very old and very popular Yes. as well. And it's a common sense kind of a thing. But what, we have actually been conditioned to think of hunger as a very, negative thing. Hunger. But actually the thing is, starvation and hunger are different things, but we confuse it with that, and that is why we talk about word hunger or hungry people, etc. पर अगर if hunger is such a bad word, और अगर आपको हंगर बंद हो जाए, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, सीधा कहेंगे डॉक्टर साहब मेरे को भूख नहीं लग रही है, डॉक्टर कहेगा कि यार भूख नहीं लगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर अगर हंगर तो बहुत बुरी बात है, तो द होल वर्ड इज आफ्टर द हंगर, हंगर खत्म करनी है, हंगर खत्म करनी है। तुम्हें भूख लगनी बंद हो गई है और तुम कह रहे हो कि मेरे को भूख नहीं लगती, मेरा इलाज करो। So obviously hunger is not a bad word. और दूसरा, we are also conditioned to eat psychologically, या तो बहुत बढ़िया कुछ चीज लिख रहे खा लो, या टाइम बाउंड ईटिंग है, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, चाहे भूख लगी है कि नहीं लगी है, टाइम बाउंड हमने अपने आप को प्रोग्राम करना, खाना ही खाना है। साइकोलॉजिकल हंगर भी होती है, पर एक्चुअली द हंगर वी शुड eat for a healthy living, we should eat when our body is ready. And our body gives us a signal that, hey, I am hungry. And hunger is, in three forms. One is the mechanical hunger. When the intestine is empty, it will send a signal to the brain, hey, I am empty, I am ready. Then there is a chemical signals that are sent as well, because if our cells, our organs are feeling deficiency of something, lower energy in the muscles or certain organ or in the brain, it will send a signal. And then there's a psychological hunger, stressful hai ya kuch, psychological hormonal imbalance hai, तो उससे भी hunger लगती है। So if we eat when our body is not ready, obviously it will not
process very well. And I also just want to point, the objective of our discussion is not to promote my book. Book was written, long time back. No, it's just And the I subject just matter want to was such share which the caught my attention. Yes. So I yeah, thought we yeah. should discuss about it. This is a good subject No, matter. absolutely. And the whole point of this book is also simple, sensible, and stress-free living, but also to bring the awareness. So we should eat with awareness. So there is a term called inattentive blindness. When we are not attentive, yes, there are things in front of us, but because of inattentiveness, we don't see them. तो इसीलिए हमारे को होता रहता है. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है. 2009-10 में मेरा वजन बढ़ गया. I was like 15-20 kilo overweight. Oh gosh. So my according to my height, my ideal weight should be between 70 to 72, 73 ऐसा होना चाहिए. And I was close to like 84, 85. Oh, sorry. Okay. I realized कि क्या हो रहा है यार, ये कैसे हो गया. पहले मेरे को इतना मेरा वजन नहीं बढ़ता था कभी भी, ये क्या हो गया. तो what was actually I figured out what was happening was because I was, एक तो मैं बहुत ज्यादा उस टाइम पे my job required a lot of international travel. So I was living out of suitcase. कभी US, यूरोप, चाइना, कोरिया, जापान वगैरह में काफी ट्रैवल रहता था. एंड फ्लाइट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया रियली रियली लॉन्ग. तो फ्लाइट में गए तब खा लिया, एयरपोर्ट पे गए तब खा लिया, फिर होटल में रहे तब खा लिया. खाए जा रहे हैं. तो ये हो रहा था. And then on one of the visits in Paris, I was actually staying in a place called Versailles, which is one end of the CBD. It's like, by train about 1 hour. तो वहां पे जनरल इलेक्ट्रिक की फैक्ट्री थी. और मैंने वहां पे देखा कि जो मैं खा रहा हूँ वैसे ही और लोग भी खा रहे हैं, वही सब खाते हैं, वो भी क्रीम बुले, वो तो वाइन शाइन भी पी रहे थे और सब कुछ खा रहे थे. मैंने देखा यार ये क्या चक्कर है, इनको कैसे है. तो देन उसके बाद मेरे को लगा यार ये तो मोटे होते नहीं है, इतना खा रहे हैं. देन आई रियलाइज, आई लुक्ड अराउंड इन पेरिस, बहुत कम लोग ओबीस थे. दे वर वेरी वेरी फिट. एंड आई वाज सरप्राइज, यार इतना खाना खा रहे हैं ये लोग, वैसे ही खाना खा रहे हैं और ओबेसिटी बहुत कम है. तो मैंने एक दोस्त से पूछा भी, क्या मैंने पूछा बहुत एक्सरसाइज करते हो, क्या करते हो. कहता नहीं कोई खास नहीं. बट व्हाट एक्चुअली सरप्राइज मी वाज कि सारे के सारे ऐसे क्यों हैं, क्यों कोई ओबीस दिख ही नहीं रहा है. ट्रेन में भी नहीं, होटल में भी नहीं, फैक्ट्री में भी नहीं. ओके माय गॉड. तो एनीवे आफ्टर 2-3 days in office, we had a conference there. Or conference was in Euro Disney, which was other end of Paris. तो वहां से वो another 1.5 hour ट्रेन जर्नी, और वहां पे गए. तो मेरे को ट्रेन में एक आध मिले जो ओबीस थे लोग, और वैसे ही होटल में भी मेरे को थोड़े से दिखे ओबीस. बट देन आई ऑल्सो पेड अटेंशन, तो वहां पे वो मेरे को अमेरिकन एक्सेंट भी सुनने को मिला. Oh yes. तो मेरे को लगा माय, अच्छा यार ये लोग. सो आई थॉट व्हाई इज इट दैट इन फ्रांस पीपल आर नॉट fat or overweight, that would be the right term to use. Then I realized कि यार ये लोग and somebody also told me कि थोड़ा सा ये लोग बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं, जो तो खाते हैं, but they leave something, they leave their stomach empty. तो मेरे को भी लगा कि यार, so I actually in the book I have used the analogy of food processor. कि जैसे फूड प्रेशर है, अगर आप उसको पूरा भर दें, then you turn it on, it will not work. It will not work. You have to leave a little space, and then it will work. And also you should leave some fire in your belly, so that the digestion system works. So this term therapeutic hunger, और अगर हम ध्यान थोड़ा सा दें तो हमारे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में कहते हैं मीठी भूख लगी हुई है, मीठी भूख. पता नहीं है मीठी भूख क्या होती है. इट इज हार्ड टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश. यार मीठी भूख क्या है. और मीठी भूख का मतलब मेरे को लगता है कि वो कहना चाह रहे हैं कि स्टारवेशन तो नहीं है, भूखमरी भी नहीं है, हल्का सा भूख लग रही है, हल्की हल्की सी लगी हुई है. सो दैट इज व्हाट आई थॉट इज द थेरेपेटिक हंगर. बिकॉज टू शेयर माय एक्सपीरियंस, मैंने फिर वो स्टार्ट किया. I started using that, कि पूरा नहीं खाता था. I used to stop at close to like 80%. उससे डाइजेशन बढ़ गया. I actually came to my normal weight of range of 72, 74, around that, within 2 months. Oh wow, okay. Well, and within days actually I started feeling better.
even the first day or second day when I was not eating full stomach, not 100%, just leave it. Uh, I just felt much better. The food tasted much better because the taste and the flavor was less lasted in me. And also, it even you will, well, at least I realized even mental health was much better. Wow. Okay. Good. So I think that therapeutic hunger, not eating too much food, just leaving little bit in the Little bit stomach, hunger. Yep. it will help physical health as well as mental health as well. और after some time वो आदत बन जाएगी, वो हैबिट बन जाएगी, वो डिसिप्लिन बन जाएगी, then you enjoy that hunger. वो जो मीठी भूख है ना, वो बस बहुत Start मजा enjoying it rather आएगा. than killing it. Yeah. So that is what the this thing is about. And I also just want to say that we are not trying to promote the book or anything. If we will put some more information about it in the comments on the YouTube channel when people watch it. But also, if somebody wants to have a copy, we will be happy to give them a free electronic copy. Yeah. Oh, that's good. If they contact us through the comments. That's lovely. I think ये जो ओवर ईटिंग की आदत पड़ी हुई है ना, मेरे को ऐसा महसूस होता है कि जब इंसान अभी हंटर गैदरर फेज में था और फूड सिक्योरिटी नहीं थी, तो जब भी खाना मिलना तो लगना कि थोड़ा सा ज्यादा खा लो, यू आर नॉट अश्योर्ड कि अगला खाना कब मिलेगा. तो ब्रेकफास्ट खा बिल्कुल रहे सही हैं. कहा. हाँ, अच्छा देखिए, कल्चरल है. जैसे फ्रांस में मैंने कहा कि वो लोग करते हैं और वो जनरेशन टू जनरेशन हैंडेड ओवर हो रही जा रही है, हाँ, और सब लोग ऐसे कर रहे हैं. और हाँ, हमारे को अगर देखेंगे, यार उसको ये थोड़ी सी पड़ी है यार, खत्म कर. तो खत्म कर वी दो. वुड रादर पुट दैट इनसाइड अस देन द रबिश बिन. एग्जैक्टली. लॉट ऑफ टाइम तो वी आर फूड. फोर्स हाँ, कि यार कि इसको वेस्ट क्यों कर रहा है, खा ले इसको ना. मैंने कहा यार इसको वेस्ट में बैग में. हाँ, ये जो हमारे को वो ये जो ओवर ईटिंग है कि नेक्स्ट मील अभी पता नहीं कब मिलेगा, ये हैबिट इतनी डीपली इनग्रेन्ड हो गई है हमारे डीएनए में कि अभी कोई फूड इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन बाहर कभी इवन जाएं. व्हेन वी आर. हाँ, ब्रेकफास्ट मिलेगा तो कहेगा पता नहीं यार लंच कभी कब मिले ना मिले, थोड़ा सा पेट भर के खा लो, खा लो. है ना. लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि 3-4 घंटे बाद खाना आपके सामने ना आए. वो आ ही जाता है. हाँ. हाँ, लेकिन वो एक्चुअली मैंने हैबिट. मैंने कुछ अपने दोस्तों से पूछा कि यार कैन यू टेल मी लास्ट टाइम यू वर रियली रियली हंग्री. एंड सम ऑफ देम वर रियली सरप्राइज कि यार हम तो हंग्री पता नहीं कब हुए थे. हम तो हंगर आने से पहले खाना शुरू कर देते कर देते हैं. हैं. टाइम से बिकॉज अभी वी गेट अप इन द मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट खाना है, टाइम लंच बाउंड है तो खाते लंच जाते खाना हैं, है, हंग्री शाम को होते ही डिनर नहीं खाना है. है. नहीं नहीं, बहुत बढ़िया साहब. तो ये बुक है साहब, अगर इफ पीपल कैन ले देयर हैंड ऑन, दे शुड रीड इट. और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जैसे अवनीश जी ने कहा, कमेंट्स में लिख दें, एंड वी विल बी हैप्पी, और अवनीश जी विल बी मोर देन हैप्पी टू provide further information or further direction in where to get this book and any other information related to Yeah, the therapeutic. book is actually available on Amazon, and I think the Kindle version is not very expensive. It's just about $3 or Right. something like that. Print one is a bit expensive, and it's up to Amazon. I'm not making any money out of it or anything. No, that's But okay. yeah. No, it's a good book to So, read. I mean, but happy आजकल to की. share. Happy to share. Whoever wants it, we can some electronic material in some way or the form. Right. I can't give the electronic material of the book, but at least the contents and what the concept is about. And it makes sense, when we are starving at that time, we have to eat food, because then otherwise it will start eating into our muscles and into our Exactly. organs. That is starvation. But then is the normal hunger, where is the nutrition providing the nutrition through the proper digestion process. But we should just stop it there. Then is this meaty bhook, therapeutic hunger, Therapeutic which is hunger very good for our physical as well as health. mental health. Good. And then on top of that, if you eat above that, is overeating. Overeating, exactly. which becomes bad for our health, both physically as well as eventually mentally as well. Mentally as well. Obesity है, और आपके जितने भी आजकल के न्यू एज डिजीजेस हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज है, और बहुत तरह की डिजीज है, वो भी साइड ये इफेक्ट. circle causality है actually. It is हाँ, one thing depends on the वन other. थिंग And डिपेंड्स ऑन द अदर. हाँ. बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी आपका. आपने एक अपनी जो रिसर्च बुक थी उसके बारे में बताया, एंड वी एनकरेज पीपल टू हैव अ लुक एट इट, रीड इट, एंड बी बेनिफिट एंड गेट बेनिफिटेड बाय इट. तो इसको यही समझते हैं साहब. थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, और अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. बाय फॉर नाउ.